So, if you look at 73rd Amendment Act, what is the salient feature, right? Salient feature of 73rd CAA. आज डेट है 10 अगस्त मान। अच्छा, इसका सेलिंग फीचर क्या है? बेसिकली आपने देखा कि देयर वाज अ डिफरेंट कमिटी and that was constituted by Rajiv Gandhi, and few committee recommended that Panchayati Raj institution should get constitutional protection, right? So 73rd Amendment recognized it gave recognition to the Panchayati Raj. Recognition to the PRI. What recognition? Recognition means constitutional recognition. Constitutional recognition to the PRI. Right? And ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, ग्राम सभा became a basic unit. Gram Sabha has become basic unit. You can call a village parliament. Gram Sabha as a village parliament, a unit of deliberative body. Why? So it gave recognition to the Gram Sabha. Then it also said that there should be uniform structure of the PRI. Right? What kind of uniformity it should have? It should have 3 tiers of local government throughout the India. Right? So uniform structure of PRI, Panchayati Raj institutions. अच्छा, uniform structure कैसा होगा? 3 types. Fine. Now उसके बाद क्या हुआ? It has become a regular and continuous body. बोला कि 5 साल के बाद इलेक्शन हेल्ड करना जरूरी है. Right? It has become regular and continuous body. ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तब पता चलता है जब आपको 90 से पहले की हालत में पूरा डिटेल में बताता क्या बुरा हाल था पंचायती राज का। 10 साल का इलेक्शन, 15 साल तक, 20 साल तक इलेक्शन ही नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के टाइम में जो मुखिया जी बने तब 15 साल पहले, वो मुखिया जी तब से मुखिया ही रहे विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ द पीपल। फाइन, बट 73rd Amendment made it provision that there should be election on after 5 years, जैसे जनरल असेंबली है। Right? So regular and election commission, now, so government election commission it provided, it empowered the governor to have election commission in order to conduct the election of PRI. ठीक है, नहीं दिख रहा है, इसको हटा दो। अब ये इधर गिरेगा, किधर गिरेगा? यहाँ पे ठीक है? थोड़ा इधर अब ठीक है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन दिख रहा है तुमको? अभी तुमको दिक्कत हो गई, इधर आ जाओ ना। हाँ, ऐसी भी नहीं है, कुछ ठंड में नहीं लगेगी। Then governor has empowered the finance commission. Right? So governor was empowered to constitute a finance commission in order to discuss the financial transfer to the panchayat. कितना पैसा देना पंचायत को? Fine. Then one district planning committee was formed.
वन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। One district planning committee was constituted and there should be one district planning committee in each district. अब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा जो ग्राम सभा डिस्कस करेगी जो इशू पे, लोकल इशू पे, वो सारे ग्राम सभा का सारा जो प्लान है वो कहाँ तक आएगा? ब्लॉक में आएगा, फिर ब्लॉक से आएगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी और ये प्लान बनाने में हेल्प करेगी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा पंचायती राज का? ऑब्जेक्टिव होगा लोकल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। You have read that? Read Article 243G. Purpose क्या होगा लोकल गवर्नमेंट का? The purpose of the local government would be local development and social justice. G. 243G. आर्टिकल 243 के, हाँ 243 के है कितने टोटल ये? हाँ तभी तो बता रहे हैं। जे अरे जेड तक है लोकल गवर्नमेंट, तुम देखो जेड से ऊपर है। जी पढ़िए। अच्छा जी पढ़िए क्या है? पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पंचायत। हाँ पढ़िए इसको तो। Subject to the provisions of the Constitution, the legislature of a state may by law endow the panchayat with such power and authority and may be necessary to enable them to function as an institution of self-government, and such law may contain provision for the devolution of powers and responsibility upon panchayat at the appropriate level, subject to such conditions as may be specified therein with respect to the preparation of plans for economic development and social justice. D. The implementation of schemes of economic development and social justice as may be entrusted to them, including those in relation to the matters listed in the 11th schedule. Fine, all right. So purpose of the local government should be the local development and ensure the social justice. Right? एक और चीज इन्होंने क्या? रिप्रेजेंटेशन। 73rd अमेंडमेंट ने रिप्रेजेंटेशन किसके लिए? एससी के लिए, एसटी के लिए एंड वुमेन के लिए इंश्योर किया। ठीक है? आर्टिकल 243D पढ़िएगा। आर्टिकल 243D रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी, एसटी एंड वुमेन। वुमेन को रिप्रेजेंटेशन कितना मिला? वुमेन रिप्रेजेंटेशन वाज 1/3 SC/ST as per their proportion to the population. ठीक है? 243D भी पढ़ लेना जरूरी है, पढ़िए। कहाँ है किताब? हाँ तभी तो बोला पढ़ो। 243D पढ़ो। पूरे आर्टिकल में 243 में दो ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 243G पर्पस क्या है इस लोकल गवर्नमेंट का, और उसके बाद 243D मेरे हिसाब से Reservation of seats. या Seats shall be reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes. सर ये पूरा जो है सारे क्लॉजेस पढ़ने हैं। मत पढ़िए, और कलर है तो छोड़ दीजिए, मैं बताता हूँ भाई। आर्टिकल 243D secures reserved seats for SC/ST in proportion to their population and 1/3 seat of the total seat for the women. Okay, Benny? Clear? Now if I talk about the urban government, 74th amendment, वो भी यही है, कुछ नहीं है, वो भी सिमिलर है। Recognition to the local government, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी कंटिन्यूस बॉडी, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन है, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन है, उसके लिए भी फिनांस कमीशन है, राइट? वहाँ पर ग्राम सभा नहीं है, वहाँ पर दूसरी बॉडी है। ठीक है? रिप्रेजेंटेशन है SC/ST और वुमेन का। फाइन, these are the salient features of 73rd amendment.
अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं पूरे अच्छे से, ये मैं लिखवा दूँ? हाँ, लिख लिया ना? चलो, ऐसे खत्म होता है तुरंत क्लास। हाँ, ठीक है। चलो, अब मैं एक डेटा दे देता हूँ। ठीक है, डेटा किसका? मिनिस्टर पंचायती राज का डेटा। ये डेटा है पंचायत का रिप्रेजेंटेशन एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC, ST, वुमेन इन PRI। आपको पता है कि 3 लेवल है गवर्नमेंट का, ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति, और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद। जिला परिषद, राइट। अगर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लिखेंगे, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो टोटल ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा है, टोटल है 27 लाख 27.32 लाख लोग इलेक्टेड ग्राम पंचायत के लेवल पे। ठीक है, 1.68 है पंचायत समिति के ऊपर लाख, और जिला परिषद पे है 0.16। ये 1.68 था, बट मैंने 1.6 रखो क्योंकि आपको याद रहेगा। यहाँ कुछ नहीं करना, इसको खसका देना है, इसे पॉइंट लगा देना। Right? Now, if you look at percentage of SC, ST and women, right? If you see the percentage of women, I'm writing W, percentage of women, then if you see 43.8% are women. 43.8% are women. Then 40% at block level, इसका women का. Then 43% at जिला परिषद level. Now if you look at SC, 22% of SC. पंचायत ग्राम पंचायत लेवल पे है 22%, यहाँ पर है बीच में 19% और यहाँ पर है 16%। अब ST, परसेंटेज ऑफ ST, ये है 10%, 7%, 1%। यहाँ है 10%, 7% इस लेवल पे, और यहाँ पर है फिर से 10%। 10% है यहाँ पर ग्राम पंचायत लेवल पे ST का रिप्रेजेंटेशन, 7% है पंचायत समिति के लेवल पे, मीडियम लेवल पे, और 10% है ये। सोर्स है, सोर्स ऑफ डेटा मिनिस्टर ऑफ पी एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज 2015। उसके बाद डेटा देना नहीं बोल दिया। 43 और 16 या 43%, then 40%, then 43%. That is the representation of women. Sir, SC में 22, 19 and then 11. 22, 19 and 16. 22, 19 and 16%. Now SC का representation 10, 7 और 10. So at Gram Panchayat 10% ST are represented. Now if you look at this data, you can think that how Panchayati Raj is a silent revolution. It is the largest, democratic institution in the world. Right? Where you can see the representation of women, representation of ST, representation of the ST in the Panchayat. है ना इंटरेस्टिंग डेटा?
बहुत सारे स्टेट में तो 50% रिजर्व है, 50% होगा। बहुत सारे 7 स्टेट 8 स्टेट ऐसे अभी तक है जो उन्होंने नहीं दिया। 20 स्टेट में ऑलरेडी 20 states have given already 50% reservation to women in the local body, local government. But still there are states which have not granted 50% representation to women. Now anyway, now if you look at this data, अगर approximate value करेंगे तो approximately 29 lakh elected representative are representing people at the lower level, right? So that is the data. Fine. Got the idea? Now you can write. Okay. It shows the data itself speaks about democratic decentralization in India. डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कल कॉन्सेप्ट बताया था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। It is a silent revolution. It is a silent revolution. And primary laboratory for India's democracy. For India's democracy. Fine? चलिए, डन नेक्शन। खत्म देखो कैसे खत्म होता है। अब एक चीज है मुझे बताना है, टॉपिक कैसे खत्म होती है, राइट? आप लोग कब शुरू किया था? मैंने 15 मई को शुरू किया था, घर से आए थे टाइम से शुरू किया था। उसके पहले तो कुछ क्लास लिए थे और बच्चे आ गए, 15 मई से फिर से मैंने शुरू किया था। मैं सोचा कुछ बच्चे को छूट ना जाए, उसी 15 मई को शुरू किया था मैंने। अगर ये तुम्हारा पूरा नोट्स है 16 मई को, हाँ, और मई टू जून टू जुलाई टू अगस्त हो गया। 3 महीने मैंने टोटल पढ़ाया, 60 क्लासेस मैंने पढ़ाया। 60 क्लासेस से कम पढ़ना, 60 क्लासेस में ठीक है, और क्लासेस कभी 1 घंटे की भी हुए, 2 घंटे की भी हुए, बट 2 घंटे में मैं 2 घंटे डायरेक्ट नहीं पढ़ा, बात भी करना पड़ेगा, नहीं तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, राइट? मैं तो कम बात करता हूँ आप लोगों से, मज़े कम लेता हूँ, नहीं लेना भी नहीं चाहिए। चलिए मैं चीज़, हाँ, कम लेना चाहिए, बट बहुत टीचर फ्रेंडली होते हैं, इतने दिन नहीं पढ़ा सकते, कुछ मज़े भी होना चाहिए क्लास में, फिर कुछ पढ़ाई भी होना चाहिए, राइट? 60 क्लास ठीक है, उससे कम बहुत। एक टीचर ने शुरू किया, वो ख़त्म करने वाले, हाँ ख़त्म करने वाले। मैंने क्या पढ़ाया सर? बहुत होता है, बहुत है, अच्छी बात है, चलो, राइट? पैसा मैंने कितना बोला था? 90 क्लास लूँगा, नहीं 90 क्लास, 90 डेज क्लास मुँह से निकल गया होगा। 3 महीने हो गए ना, बहुत है। और क्या पढ़ोगे? 90 क्लास में तो समझ लो कि मैं फिर तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लग जाऊँगा। ऑलरेडी मैंने बहुत पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया था हम लोग, ठीक है, हड्डी के साथ बहुत सारा मांस भी पढ़ा मैंने। अच्छा, पैसा क्या हुआ? पैसे की हिस्ट्री सुनिए, लिसन द हिस्ट्री ऑफ पैसा। व्हाट हैपेंस व्हेन PRI 73rd amendment came, right? What 73rd amendment did? It gave protection, it gave recognition to the PRI, and PRI uniformly implemented all part of India, including the 5th schedule, including the 5th schedule of the Indian Constitution. Now what happened? What do you know? 5th schedule. What does it do? What it is? Schedule? No. It is a tribal area. It is a tribal areas. You know, schedule in the Schedule 5. What is Schedule 6?
Other tribal areas. There are tribal areas in 4 states. Schedule 6, that is Schedule 6. Also, Pune sub-special. इसमें 10 स्टेट है टोटल। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राइट। आंध्र प्रदेश बोल दिया मैंने और उड़ीसा ही बोल दिया, झारखंड भी बोल दिया, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में नहीं है, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में है, राइट, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये सब एरिया इसमें ट्राइबल एरियाज। अब क्या हुआ कि दिस PLI was implemented uniformly. Now the people of Rajasthan, people of Andhra Pradesh, tribal people challenge the law. Which law? 73rd Amendment Act. It cannot be implemented in the scheduled area because there are some constitutional protection to the scheduled area. Now Andhra High Court declared 73rd Amendment, implementation of 73rd Amendment in 5th schedule area as an ultra vires to the constitution, right? In response to this High Court judgment, Parliament or the government appointed a committee headed by Dilip Singh Goria. He was an MP from Madhya Pradesh, right? He was an MP of the partner from MP, tribal MP. He was an MP, tribal MP from MP, yes. And Dilip Singh Goria committee recommended, that okay, this PLI should be extended to the 5th schedule, but we need to make a different kind of legislation. We need to make a different kind of legislation, and that is called PESA. Right, and the Parliament passed Panchayati Raj extension in scheduled area. इसका नाम यही है, Panchayati Raj extension in scheduled area Act. ये आया 1996 में, ठीक है। अब इसने क्या किया? It has, gave power to the Gram Sabha. It has given power to the Gram Sabha to protect the local produce, local land, local forest, right? And it has substantial power to protect the custom, culture, everything from intervention. The tribal जो area है वहाँ पर non-tribal का बहुत ज़्यादा intervention है, right? So this act, empower the Gram Sabha, right, to protect the tradition, custom, culture, tribal economy, right, and make local law for the self-government. Fine. Now even then, if you see, after the PESA Act, even passing the PESA Act, Indian government has intervened, or the non-tribal people or the corporate, all three together intervene in the tribal area. You must have seen, conflict between tribal and non-tribal, tribal and corporate, tribal and state, right? एक दिन मैंने बोला आपको एक गाना देखने के लिए, गाँव छोड़ब नहीं बोला, नहीं छोड़ा, नहीं बोला। अच्छा, उड़ीसा और झारखंड के बीच का गाना है, एक बार देखिएगा YouTube पे, लाइन है, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माई माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, right? The tribal are, who is displacing tribals? For whom? Right? Have you mobile? Can you watch it? Now, yeah. 5 minutes. It is an educative one.
there are different kinds of pedagogy. If you don't use it, मूवी दिखा दो और कहानी बता दो. हाँ, पढ़िए इसको देखिए. Right? So you know the key idea, but you must be sensitive towards the community, especially the vulnerable community, like tribal, like poor, like Dalit, women, LGBTQ. ये बात होती है, कोई दिक्कत नहीं. पढ़ो, साउंड तेज करो और पढ़ो. I'm permitting you. Yes, don't worry. हाँ, कलेक्टिवली शो करो तो दिखा दो सबको. मैं तो 5-6 minutes का सॉन्ग है. And understand the total development idea through a song. Maybe there is subtitle, you can understand. एक साथ जाके देख सकते हो. देख रहे हो? आवाज वहां से सुनो, देखो.
Okay, got it. Now, सुन लिया? Now, what does it say? It said four things basically. It questions the moral development. It questions the basic, it raises the basic questions on the models of development. Right? Secondly, it said you enjoy several things, right, at the cost of us. तुम पियोगे बिस्लरी कोला, हम पे क्योंकि तुम आ गए यहाँ पर, तुमने सारा खदान खोद दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हमारा जो पूर्वज का वो खत्म कर दिया, राइट. थर्डली क्या बोलता है कि तुम विकास करने आए, राइट, मंत्री आए, कॉन्ट्रैक्टर आया, हम अगर प्रोटेस्ट करने हैं तो तुम पलटनी पुलिस वाला पलटनी ले आए मारने के लिए, राइट. एंड व्हाट यू हैव डन, you have colonized us. You have colonized us, and what happened? We are the exploitative. We are being exploited by you, and that song in the last gave call to the people, tribal people, be unite and fight against this exploitation. That's all about this song. Right? This questions the basic model of development. राइट, कि अगर विकास किया तो कहाँ गया वो? मछली मर गई, चिड़िया उड़ गई, राइट. क्या हमारे जो पूर्वज बेकार थे कि उसने फॉरेस्ट को बचाया, उसने प्रिजर्व किया बहुत सारी चीज़ें को. बेसिकली, so if you look at after 1996, even the condition of tribal did not improve. There was a continuation of exploitation, and there was a movement, tribal movement, a strong tribal movement in India, right? From MP to Delhi, tribal people, walked naked, barefoot. Right? In Maharashtra, the tribal people marched towards the Azad Maidan, right? And if you look at government, it's not only the people, also journalists, educationists, lawyers, right, political party, civil society group, Ekta Parishad was very instrumental in that, and they influenced the government, okay, you bring some law to protect the right of the original people. They are the Adivasis, they are the original people. Now, what happened? In 2006, government passed an act that is called Forest Right Act. Forest Right Act. इसका जो पुराना नाम है, बहुत बड़ा नाम है. That is called. 1 minute, telling you. Budget notification. Forest Right Act, it is called Right of Scheduled Tribe on the original forest dwellers. Recognition of rights of the people as ST, Scheduled Tribe and original forest dweller ऐसा कुछ नाम है. But popularly it is known as Forest Right Act. And जब कोई भी बिल बनता है तो नोटिफिकेशन होता है, तब एक्ट आता है ना, नोटिफिकेशन निकलता है. This notification of this act accepted that there are complex historical injustice with the tribal people, right? And that injustice initiated during the colonial time. And that continued. That means government accepted its failure, that it was unable to protect the rights of the tribal people. Right? And they passed an act that is called Forest Right Act. And through this Right Act, there are the 4 kinds of rights. We will talk about 4 kinds of rights later on. First you write about पैसा. तब पैसा से हम आ जाएंगे FRA. Right, PESA Act लिख लिया, heading दे दीजिए PESA Act, and right,
The 73rd Amendment Act was implemented across India uniformly. The 73rd Amendment Act was implemented across India uniformly. The state of 5th schedule area challenged 73rd CAA. State of 73rd CAA challenged 73rd CAA. People of Andhra Pradesh went to Supreme Court and filed a PIL. The Andhra High Court, Andhra Supreme Court नहीं, Andhra High Court, हाँ, मैंने Supreme कह दिया, Andhra High Court went to Andhra High Court and challenged the Andhra High Court declared 73rd CAA implementation in 5th schedule area as ultra vires. Implementation of 73rd CAA in 5th schedule area ultra vires. ठीक है, समझ में आया? इसको कोर्ट में चैलेंज किया, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट declared 73rd CAA implementation in 5th schedule area as a ultra virus. In response, full stop देने के बाद, in response, the government appointed a committee headed by Dilip Singh Bhuria. To examine and recommend about local government in 5th schedule area. To examine and recommend about local government in 5th schedule area. Bhuria committee recommended to legislate a separate law. Bhuria committee recommended to legislate a separate law for tribal areas. Consequently, PESA Act passed in 1996. Consequently, PESA Act passed in 1996. ठीक है? लेकिन key features of PESA Act, देखिए, it recognized पहला है, हाँ, पहला फीचर, right? It recognized right to self-rule of tribals. It recognized right to self-rule for the tribals. Second, it provided Gram Sabha as local parliament. To deliberate their issues. Right? Third लिखिए,
a uniform structure, a uniform three-tiered structure of PRI. जैसे वहाँ पर है सब कुछ वही है, थोड़ा ग्राम सभा को यहाँ ज़्यादा पावर दिया गया है. A uniform three-tiered structure PRI provided for tribal areas. कोर्ट लिखिए. कोर्ट लिखिए. PESA Act provided reservation of STs and women. यहाँ पे SC की कोई बात नहीं है. STs and women as in the local government. Reservation for ST was in proportion to the population. And 1/3 seats for women. Reservation in the local government. वो भी तो local, PESA Act भी तो local government है. In the local government, the ST seats were reserved in proportion to their population. ST का जितना population है उसी हिसाब से रिजर्वेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल MP में ज़्यादा है, राजस्थान में कम है, तो MP में ज़्यादा होगा. देखा. And 1/3 seats for women. All chairperson seats were reserved for ST. All chairperson seats were reserved for ST. And 1/3 seats of chairperson were reserved for women. It also recognized state election commission as a body to hold election. ठीक है. नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन, जो वहाँ पर था बिल्कुल यहाँ पर कोई अंतर नहीं. There is no difference. Everything was there, but what was special? Now I will talk about. ठीक है. जो वहाँ पर सिमिलर है. देखिए, the salient feature of or the important feature of PESA Act was that it had given more power to the Gram Sabha. It had given more power to the Gram Sabha. The Gram Sabha, the GS, Gram Sabha को GS लिख सकते हैं इसके बाद. The GS has become a responsible government at local level. Okay? It has a right to preserve. It has right to preserve local economy, custom, culture, right? Local economy. और क्या लिखा? Local economy के बाद culture, custom, and local conventions. Local conventions. It had also right to resolve the local disputes. It had also right to resolve the local disputes. Fine? हो गया? However, पैराचेंज करके PESA Act did not stop. However, PESA Act did not stop exploitation of tribal by corporate, non-tribals and state. Right?
tribal people started a movement. The tribal people started movements against their exploitation. They also demanded recognition. They also demanded recognition to their land rights. Recognition to the land rights. In 2006, the government passed Forest Right Act. Forest Right Act, which recognized Forest Right Act 2006, which recognized that the tribal people and other forest dwellers have faced complex historical injustice due to consolidation of state in colonial and post-colonial era. कुछ दिन पहले ट्राइबल के बारे में एक आर्टिकल आया था, अगर आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो. नाउ ट्राइबल, there is a more cyber, right? Now people are in a person from tribal community has become head of the state. You know how much tribal population India has? It's 11 million. And if you compare, it will be 13th largest country in the world in terms of population. 14th largest country. Now, but if you look into the story of tribal, एक story मैंने आपको गाना के थ्रू बताया. It is a story of exploitation, right? Complex historical injustice government of India has accepted. It is a story of displacement. It is a story of, operation, nothing else. Fine. Right, so symbolically, okay, if you have made some person as a head of the state, then state must also think about the welfare of the tribal people. Right? Or at least they should not be oppressed. नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट आपने दे दिया, एनवायरमेंट क्लियरिंग दे दिया, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री क्लियरेंस भी दे दिया. किसको? कॉर्पोरेट को आपने जिम्मेवारी भी दे दी, जाइए वहाँ पर होता क्या? अब पोस्ट को कौन किया? राइट, उसी दौरान ये गाना बना. अब वो मंत्री को भी पैसा देगा, बाबू को भी पैसा देगा. राइट, अब जब प्रोटेस्ट करेगा जो वहाँ के रहने वाला ट्राइबल है, आप पुलिस ले आओगे कि जी हमारा तो कानूनी हक है. राइट, ये कानूनी हक नहीं है. एक तो तुमने पर्चा बनवा लाया, राइट, दूसरे का शोषण करने का कुछ नहीं. इट्स ऑल फ्लॉड फॉर देम. I'm telling you from their perspective. It's all flawed. Anyway, but if you look at Authorize, if you recognize, tell it now. It has recognized rights. Right? So PESA and this two were the very instrumental in recognition of the forest right or rights of the tribal people in India. Fine. Right, Authorize 2006. Right, in 2006,
in 2006 ये FRA में लिखने की इम्पोर्टेंट क्या FRA के अंदर लिखने में FRA में शुरू करिए, मैं FRA की स्टोरी बता रहा हूँ मैं। The government passed a law in order to recognize rights of the forest dwellers, and the tribal people. The FRA has recognized 4 kinds of rights. FRA has recognized 4 kinds of rights. First, title rights. Title. You are entitled to this bag. Is it your bag? So you are entitled to this bag. Nobody has authority over this bag. Title rights, right? It refers to an idea that ST and forest dwellers are the sole owner of their land, forest, and water bodies, along with forest produce in their region. क्या क्या होता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस में? आपके उड़ीसा में होता होगा, आपने वहाँ पर आप फॉरेस्ट, इफ यू सी फॉरेस्ट एरिया नियर द सिटी, यू कैन सी देयर, वहाँ पर खिलाने का अलग वो है, दुकान वाले में आपको पत्ते का वो मिलेगा और पत्ते के कप ऐसे कटोरी टाइप और उसमें वो खिलाता है। वो फॉरेस्ट वो कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है। बीड़ी, राइट, बीड़ी जो है वो वहीं पे होता है। उसके बहुत सारे चीज छोटे छोटे होते हैं। दैट इज कॉल्ड, देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 14 product that has been recognized that there are sole authority of tribal people. कोई दूसरा नहीं ले सकता। फाइन, तो ये हो गया टाइटल राइट। सेकेंड लिखिए यूज राइट्स। The tribal people use USE, use right. The tribal people पहला था टाइटल राइट, दूसरा है यूज राइट। The ST people and forest dwellers have right to extract minor forest produce. Like bamboo, right? ये हो गया दूसरा। तीसरा लिखिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स।
देखिए, the tribals and forest dwellers have right to manage forests. Have right to manage forest. They have also right against displacement. They have also right against displacement and forced eviction. Forced eviction मतलब जबरदस्ती जो भगा देते हैं उसके अगेंस्ट में उनके पास राइट्स है. ठीक है. हो right to relief and development rights. Right to relief and developmental right. ये तो सब आप शायद ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, इन्वायरमेंट में भी पढ़ा होगा. अभी नहीं हुआ, पढ़ेंगे वहाँ पर, वो भी पढ़ाएंगे ट्राइबल के लिए क्या राइट्स है, राइट. हाँ ठीक है. FRA provided right to FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट सिंपल बोलते हैं इसको. फुल फॉर्म है इसका फुल फॉर्म है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ एक्ट 2006. फाइन. चलेगा. राइट टू रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स. देखिए, तो ST have और फॉरेस्ट ड्वेलर्स have right to relief, right to relief if he or she is damaged or displaced due to certain region. They have also right to development, right to socio-economic development. They have also right to socio-economic development. Right? Important point रह गया, 3-4 मिनट है, हो जाएगा. देखिए, FRA Act also empowered the Gram Sabha to pass resolution in matter of any conflict arising due to land dispute. Due to land. क्या करेगा? The Gram Sabha has right to pass a resolution, right, in matter of conflict arising from the due to the land, right. If aggrieved party is not satisfied with the Gram Sabha resolution, then it can approach to the subdivisional level. Subdivisional level. एक तो ग्राम सभा पे हमारा झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, अगर उसने रिजोल्यूशन पास कर दिया, आपको मानना है, बट इफ यू आर नॉट एग्रीड, यू हैव टू अप्रोच टू द सब डिविजनल लेवल, दैट इज सब डिविजनल कमिश्नर होता हुआ. ठीक है. मोर further if aggrieved party is not satisfied from the subdivisional commissioners, from the subdivisional level, they can approach to the district level committee. They can approach to the district level
committee. The district level committee's decision will be final. समझ में आया? ठीक है? ये ग्राम सभा को इसने खूब पावर दे दिया। तो 3 सिस्टम बनाए, ग्राम सभा, एक सब डिविजनल लेवल एंड एक डिस्ट्रिक्ट, राइट? अदरवाइज जो भी राइट्स पैसा में तो वो तो था ही, राइट टू प्रोटेक्ट, राइट टू प्रोटेक्ट कन्वेंशन, ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर, वो सब है, ऑलरेडी था। इसको ये स्ट्रेंथ किया। बेसिकली 4 डायमेंशन में मैंने आपको पढ़ाया, टाइटल राइट्स, यूज राइट्स और राइट टू रिलीफ एंड डेवलपमेंट, और एक पढ़ाया शाम क्या था? नहीं और था या फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। ये चारों पर्सपेक्टिव में पढ़ा है। 4 अलग अलग राइट्स हैं। इसके अलावा ग्राम सभा को खूब पावर दिया गया कि अगर लैंड का कुछ होता है, अगर कोई बाहर वाला भी लैंड आता है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ग्राम सभा रिजोल्यूशन पास करेगी, राइट? नाउ have you seen this government has made some law regarding to environment, right? And that had made not only this government, the earlier government too. 2014 के जैसा नहीं था कि ट्राइबल के लिए बहुत स्वर्णिम काल था और आज नो। Even the same government, UPA government, which passed the FRA, broke the law several times. Right? And what happens? We, the Indian people, are very chaotic and unstable mind. हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है लाइफ में, ठीक है? I'm telling you, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, उसके बाद उसको पावर यूज ही नहीं करने दिया। अगर मैंने उसको दिया है पावर, लेट देम एक्सरसाइज फुल्ली। यहाँ पर पावर भी दे दिया है और निक्सन के हर काम में जाकर के मैं इंटरवीन करता हूँ, राइट? नाउ यू सी दैट वेरी स्मॉल कमिटी फॉर्म फॉर दिस एक्ट, यू डोंट नीड टू मेंशन, राइट? बट सिंस द Murmu madam has become head of the state, I hope the government will take some good steps, welfare measures for tribal community. फाइन, तो FRA खत्म हो गया। कल आपको चैलेंजेस एक बताऊंगा, वुमेन एंड पंचायती राज एस्टेब्लिशमेंट में, एंड देन चैलेंजेस ऑफ द कुछ चीज़ें और बता के टुमारो आई विल स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है? चलो आज यहीं तक। सर जो यूज राइट है, जैसे हम यूज ना कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करना। हाँ, कॉमर्शियल भी पर्पस अगर होगा तो दे विल बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते? बहुत से बिकता है। नहीं, वो तो टाइटल राइट में है, समथिंग बट यूज राइट में वो यूज कर सकता है, यूज कर सकता है, दूसरा में कोई यूज नहीं कर सकता। बेचने वाला छोड़, वापस में बेच सकता है। नॉन ट्रैवल को नहीं बेच सकता, बट आपस में यूज कर सकता है। मान लो छोटा सा पॉन्ड है, बैम्बू है, छोटा सा खेत है, देयर आर मेनी थिंग्स, दे कैन यूज इट।